to speak clearly. So if you can't understand it, just feel the pain. Okay. So here we are live again. In the last streaming session, we have revised the our front end completely, but we have just struggling how the data will be passed to the home page. Okay. And right now I'm just in this revision session we have understand the how the flow will be worked in that session. Okay. So here we have used the anti-gravity code editor. If anyone used this code editor, just comment down because I like it, this code editor, because it's actually working so nice. Okay, so before just like I can check my voice, so I can start the streaming in a few minutes. In this revision, we have revised the our front end completely, but we have just struggling how the data will be passed to the home page. Okay, and right now I'm just in this revision session we have understand the how the flow will be worked in that session. Okay, so here we have used the anti-gravity code editor. If anyone used this code editor, just comment down because okay, I like it, this. Okay, so my voice quality is clearly है ना, it's clear to everyone. So just if you just listen to me clearly, just write down comment anything and I can just understand is my voice clear. Okay, so now let's start the review session in just 1 to 2 minutes. And if you don't know which product I am discussing, I'm discussing the project. That's my project name is auth app where you can user can sign up it and log in it to the user. Okay, and it is then completely not a beginner. If you know basic understanding of how a front end work, how a backend work, how Node.js work, so you can just simply watch this streaming, and I hope this will be actually help for you to building an web application. Okay, so let's start the streaming session. If you are my subscriber, just comment down so I can just ask you, and I just realized. Okay, so let's start the streaming. So I can just simply go to the anti-gravity code editor, and here I can see that first thing we have to run the server and the front end. So let's close this all unnecessary tab. Just go to the npm, not a cd front end, npm run dev, and here is our front end web page. Okay, and now let's run server. Just go to the cd backend npm run dev, enter, and our server is also started. Just go to the browser and write down port number, should be a local host, and port number is 8000, and API homepage. And here we can just simply API. This is our root address, homepage, and just enter it. And here you can see that this is our homepage that running on port number 8000. Okay, so here is our website completely, and here is our database where we have stored the database. Okay, if you are not creating the account in that application, you can simply just go to the sign up page and your account will be successfully created and your data will be stored in that file. Okay, and here you can see that right now I have 9 documents in that file. Okay, in that collections. So here are the 9 documents. I have created 4 to 5, and almost the 3 to 4 will be created by a streamer, created by a viewers. Okay. Bro, what framework are you using? Bro, I am using a MERN stack to building this completely OTAP. And currently I'm learning a MERN stack completely. And right now I'm moving towards Next.js also. Okay, so in this month I'm just revising a completely MERN stack. Then I jump to the Next.js. And currently my MERN stack is completed, so I'm building a project. And now I just revise and explain to myself. So if I just apply for a job and internship, so I can teach and explain to the interviewer very easily and clearly. So I use this method to
revise my concepts. Okay. And if you are just struggling to anything, you just simply ask me question. I just reply to the all of the questions. Okay. From how many months you are doing? I'm doing the month stack for the last. I'm not consistent because I'm doing a front. I completed front end in 2024. Okay. But in 2025, I just wasted my most of the time of the bad thing that I have should not. तुम समझ जाओगे मतलब कि किस चीज़ में मैंने अपना टाइम वेस्ट किया था। सो जस्ट लाइक अभी मेरा जो मंच स्टैक है अभी करेंटली मैं मतलब 6 महीने से मैं अच्छे से कर रहा हूँ। एंड आई वाज जस्ट लाइक स्ट्रगलिंग कि आई विल बी stuck in tutorial hell. So I choose this method to revise my concepts. That's it. Okay. And if you are learning coding by watching YouTube videos, so I know you can also struggling to in tutorial hells. If yes, just comment down. Are you a person that who is struggling to code without watching tutorial? If yes, just comment down because I will because most of the viewers will struggling to write down a code without and watching a video when it's come to building a project because it's normal. Okay, I'm also building this project using a tutorial and now I just explain it to myself and just write every single line of code by myself. Okay, and this code is literally complicated. Okay, if you don't know how what is and how the front end, how the use state, how the React and backend server work. So I think you can't be struggling to understand the concept that I will teach you. Okay. So make sure you know the basics of Node.js and a React. So you can understand it. Okay. So now let's go to the anti-gravity. And here you can see that our both server and a front end is running. And now just you can if you want to try this project, I just pin the live demo of this link because I already deployed this project. And here you can simply go to that live link and you just simply created the account. Best of luck, brother. I can code most of the time like the front end, but when it's come to back end I have to watch it. But it's only been 1 month. I will give at least 6 months, then I will try. Yes, bro. I just if you are just give you 6 months, that's a good thing. But don't stuck in tutorial because now you don't need to understand all things about a backend. You just understand to need some necessary thing, then jump to the building project. And when you build project, then what you need you just simply need to learn and implement in your project. Okay. And I use this method because when because I also use this method while learning. You just go and watch the tutorial entirely 20 hour 30 hour one shot front end React backend. And I think when I just watch it, it's completely not completely useless, but it's not beneficial if you are a learning web development or this type of technologies or coding. So you don't need to watching our entire full tutorial. So I using this method and it's also depend on the person which method they like to learn. Okay. And if you have just see that, can I also pin the okay the 9 documents I have? I just simply go to the I think I need to paste this live demo link to the on my description as well. है ना? Okay, so let's like live demo लाइव डेमो के हिसाब से ये रहा हमारा प्रोजेक्ट सो इफ यू हैव टू जस्ट यूज दिस प्रोजेक्ट जस्ट सिंपली गो टू द डिस्क्रिप्शन go to the live chat everything I comment I pin this projects okay so you just simply go to and this revision session we have also discussed how I can deploy this front end to the Vercel and back end to a backend in the render okay so here it is we are and now we just simply go to the anti-gravity okay implement plan okay so in last revision session, we have understand how the revision, how the home page, not a home page, a sign up page work. Okay, it is a form data, and we have created a function that a handle submit and when handle sign up, and whenever a user click on that handle sign up,
we just here we can set our function that will simply e dot prevent default. What is the role of e dot prevent default? You can see that prevent page reload, because whenever you just click off submit version function, the page will be re-rendered, and it's not a chance, it is always your page will be re-rendered, and whatever you have write, it will be erased. Okay, it will be erased, and maybe because should I need to make zoom or no, because I think you can easily visible to all of you. It's visible to all of you. You can simply see the code in that file. If yes, just write down. Okay, so let's start the session. So it is an handle page. E dot prevent default just prevent page load. ठीक है, कि जब भी मान के चलो हम we have write anything there, just write Naman, not to Naman, we have to just create a new account, and let's use the something like character, like which I can use it. Just create an account using just create account of Jon Snow, है ना? Should I create an account of username Jon Snow in yesterday? I think not. We have not created any user from the name of Jon Snow. Does anybody know who is Jon Snow? Does anybody know who is the Jon Snow? So just write down in the comment section. Everybody knows who is the Jon Snow. Only few people know who is the Jon Snow, because this week's web series is watched by a some goated person, है ना? I just also give you a hint as well. Okay, and here is a username, and Jon Snow, a username should be John, ठीक है? It's a John. Why Jones? Just Jones Snow ही लिख देते ना पूरा complete. And just email should be email I just write, you can write anything. And I it's not a registered Gmail, I just created right only, because we have not currently implement the verification code, because it will take a more complexity thing. So we have just used the John Gmail dot. Okay, at the rate John at the gmail.com, and password is a 123456. Okay, so we have just simply write these details, and whenever we just click on sign up, a page will be re-rendered and data will be removed, because if we can't use this method. So just suppose we have just create on sign up, and we don't use this method, and this all data will be removed. So what is the so we have not created successfully, because it will just simply give an error. You can't write it anything. So just like key, what it's I'm just remove this code from there, and just control the X, and whenever we just click on sign up, here you can see account created successfully. But I think it should not be work. I think we have used the deployment thing, ये वो काम तो नहीं करना चाहिए था. Okay. So you don't know John Cena, Jon Snow. Ankisha. So you are just said you don't know who is that. Am I talking about a Jon Snow or whatever? Because I'm just currently I'm talking about this code, because I just removed the e dot prevent default, but sign up page is successfully created. Okay, so the bad
setup ठीक है okay. Here I can see drop frame rate is okay. Tower will be entirely full. So why does YouTube show me uh user experience of buffering? Is video buffering? If yes, just comment down. Is video take buffering? It will take time. Just comment down. Okay. So now just jump to that. Let response await Axios. If you don't know what is an Axios, so just in simple word, you just understand what is an Axios. Axios is just like this is a middleware that help us to communicate your server that if they are running on a different port. Just suppose this is our home page that will be running on localhost port number 5173 and this server is running on localhost port number 8000. Okay, both are running on different port and when you just try to communicate with so you can send this data to this host, you can't communicate it because it will be given error of cross origin. So to handle the cross origin, you can simply write Axios so we can send and get the data from that file. Okay, so we just simply write the exhaust.post and server URL. We have just imported the server URL from context API. It is nothing, it is just a URL that here you can see. Here is our URL. Okay, just wait. Here is our, you can see account server URL, env server URL, import meta.dev.env.dev a localhost 8000. Okay, use existing white server URL if available production, otherwise localhost development. Okay, तो हमने deploy कर रखा है, so that's why some code will be changed because when I just deploy it, it give me a lot of error and I'm struggling to that why I use the chat GPTs, not a chat GPT, I use anti-gravity AI tools to production to deploy the project without an error. So there's just change some minor code. So the chat GPT, what is this? Okay, Jim buddy calling. Hey buddy, Suraj, hi. Hey Suraj bro, how are you? Gym buddy? Yeah, I'm a gym freak as well. Okay. Uh, Just ask the chat GPT an AI teacher. Here is our AI teacher. Right now in Instagram, everyone says everyone web developer if they know how to use our AI tools. It's just like if you don't know how to what the actually code work. I think no one can becoming a developer without understanding this line by me. Oh, now I'm understanding you. I said gym buddy calling. Yesterday I'm go live and my friend calling me for the gym and you just see in the streaming, bro, you know, अब समझ आया मुझे कि तुम why you using gym buddy calling. प्रोसेस थोड़ा लेट करता हूँ मैं कभी कभी. Just like give it, I think. So, bro, I have one question from you. Just like I go to the live streaming by a horizontally and vertically, but I only getting views from horizontal. Why? Not from the vertical.
I'm not getting any even single views from a vertical streaming because I'm still go live with a vertical, but I just why I'm not getting any views from this type of vertical streaming live. Everyone said just start the short streaming and you getting more users. What is your bitrate setting? Below that, encoding is just like key. You said encoding output. I just putting the bitrate 2000 KB. So should I need to decrease it more, bro? Below using encoding present medium. Encoding. Replay buffer. Bro, what when I just in a VS by them say the VS code in OBS Studio, it will be say the network will be a completely a draw frame rate is 11.3 and it is but still they will be facing a buffering here. Why this? Oh, we have a 33% viewer they just said they don't have a computer science, they don't do pursuing computer science, but they still like uh use output in simple setting, not advanced. I think I am right now I'm in a streaming session, so we can't change it because it's not working. Okay, so in the next streaming, I will be just put this thing in a basic because if we have to put this into a basic, we should need to disconnect the streaming and then I can start it. So why I just disconnect this streaming session? Let's start this from okay. So here I can just simply go to the I'm just asking to chat not a chat GPT to what is this code is actually working. Great number let understand. This code decide which backend server URL your app should use. Production server localhost. Example. Const env server URL is import motivo.env server URL. If check. If you have set a custom server URL is an environment variable, invite environment variable start with with example.env file should be your link. So this line means, hey Veet, do you have a server URL? Save in environment variable. Step 2 const server URL env.server URL is a variable एंड यहाँ पे और ऑपरेटर लगा और क्या कर दो उसको इंपोर्ट कर दो वहाँ से दिस लाइन इज स्मार्ट इट से इफ सर्वर यूआरएल एग्जिस्ट यूज इट ठीक है जस्ट लाइक कि इन्वायरमेंट में अगर सर्वर यूआरएल तो यूज इट अदरवाइज इस ऐप इज रनिंग इन डेवलपमेंट तो यूज कर दो दिस अगर इन प्रोडक्शन तो यूज कर दो दिस ओके simple English explanation think of it if I have a real production backend URL use that if I have a real production backend URL use that if not and I am developing locally use localhost otherwise use nothing okay. Change present to medium. Medium, not slow, but quality. Change present to medium. Present to medium, bro. Just like it. Wait second. Where is the present?
Okay, here is a present, and you just said put down into an. Okay. Bro is helping me like a mentor. Thank you, bro. You just simply, I just need to route a simple bitrate 290, hardware and medium quality. Okay. So I think first thing if we have to put this streaming, do this setting, first I need to disconnect the streaming, then I can change it now because it's not working actually. Whenever I just click it, it's not working. You can see that there will be this opacity is down. That's mean this is currently disabled on this streaming session. When I just disconnect it, I think this option will be open it. So I think we have to just simply put the video encode options is showing or not. Input नहीं हो रहा. I still I put down the medium to present to medium, not slow but high quality. Okay, uh, go to the medium quality. Okay, and just okay. I think it will be okay, not applying. So just go to the output, high quality, medium. Okay, so if we have used the okay and apply, both are working as same. So okay, just applying. Just wait a second. I'm getting a call. Hmm. एक कंपनी वाले भी सुबह ही कॉल करेंगे. जियो वाले भाई रिचार्ज खत्म होने वाला है. मुझे बोलेंगे अबाउट टर्निंग एज हाउ जस्ट चेंज प्रेजेंट above टर्निंग के लिए. You said set the tuning to present. Send your settings snapshot on the link. Okay, bro. Thank you. As of now, just change present above tuning. So what's to set the tuning, bro? Tuning को क्या set करूँ? भाई try एयरटेल जियो वालों को पड़े. Bro, but Airtel is some little costly, na? It's okay, stream will not lag now. Okay, so okay, just stream is not lagging now, so let's start the streaming. Okay. I think I have to just start a one Q&A on every Sunday, so where we can just don't quote, just talk. Because I will just like कि साथ में बात भी करो and streaming भी करो ना, it's little difficult है ना, because दोनों चीज साथ maintain करना ना नहीं हो पाता मेरे हिसाब से तो. बिकॉज आई एम जस्ट लाइक कि अभी बात भी करो एंड फिर बिकॉज ऐसा लगेगा ना भाई इग्नोर कर रहे हो. एंड मुझे भी अच्छा भी लगेगा ना कि मतलब रिस्पॉन्स तो देना बनता है ना, अगर जस्ट लाइक कि अभी तो मैं एक ग्रोइंग क्रिएटर हूँ बस, है ना. डेवलपिंग क्रिएटर लाइक इंडिया, डेवलपिंग इंडिया. डेवलप नॉट डेवलप डेवलपिंग. Okay, so I just understand how this code is working now. Just move to the code and just here we just simply said that कि मतलब क्या है, if this entire website will be running on a server URL. A server is just nothing. Server is not server. Server is just like we have created. We have deployed this entire backend onto the render. Okay, so render क्या करता है? They just ना अपने frontend के साथ fetch करना होता है. So if this local host URL 850 is not working, just use the deployment deployment URL. Okay, I think you will understand it. If yes, just when you are off stream, let's
Have a chat will set up your OBS as per your PC and network. Okay, bro. Sure. After saving session. Bro, can you just you know what why my short streaming is not going to the short feed? Because I will be creating a horizontal and vertical feed, but my views is going to the only on from and horizontal views. Yesterday I streamed live with the setting and I sent you and you found a template to streaming that gamers use often in awesome to handle camera switch. Okay, गेमिंग भी करते हो क्या ब्रो तुम? You are a gamer as well. Are you doing gaming as well? गेमिंग भी करते हो? मैं तो करता हूँ वैसे थोड़ा बहुत खेलता हूँ ऐसा मतलब स्ट्रीमिंग नहीं करता because I'm a literally noob. I'm a very hard gamer कहते हैं ना जैसे BGMI के स्ट्रीम कैटेगरी स्ट्रीम कैटेगरी व्हाट इज स्ट्रीम कैटेगरी जस्ट लाइक कि I don't know what are you talking about stream category. I don't understand what you are talking about. I will just keep my views is not getting for 71. Okay, okay. सब करता हूँ बस लाइव नहीं करता. Oh, bro. You are just trying everything but don't go live. Why, bro? Why I don't go live? Oh, we are VDP, bro. I just ignore this one comment. You are VDP. क्या बना रहे, bro? I'm just building a web application. I'm already building. I'm just go through to the project again. Okay, because you can't understand the entire project in one slot. Okay, so मैं अभी बना रहा हूँ and here you can see that I have just already mentioned a live project link so you can simply visit it and create it your account. Okay, तब करता हूँ bro. Why are you not in live? Just go live bro. Just try to. मैं भी तुम्हारी लाइफ पे आऊंगा फिर मैं भी कमेंट करूंगा मैं भी तुम्हें बताऊंगा कुछ ना कुछ तो गेमिंग वैसे मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकता है मैं लिटरली न्यू पर्सन. While starting streaming, what category you select depend your streaming going to which type of people. And vertical streamers is for entertainment and gamers. Okay, I'm choosing a math education, bro. And you can just see that I choose the category education, bro. Here I can see that because it is an education content. Na just I can see the edit, and here you can see that I will be selected it to a education. I choose the education. That's why because but if I just use the entertaining method, I don't think this viewers is good for this streaming because this will be just take reducing the streaming retentions because they will are getting for they need an entertainment, not an education. You know? They want entertainment. Everyone want entertainment, but I will be focused on both. Okay, so that's we have understand it. It is this is a function. Okay, get user is a completely function. Okay, and first thing we have to just understand this function because whenever we just click on sign up, you can simply see that email I just created a username don at the rate gmail.com and password is 123456. Okay, and just click on the login and here I can see that we have just successfully created the account. Okay, and whenever we just click on login here you can see the home page. How the actually home page work? ओके होम पेज के अंदर हम एग्जैक्टली एक्सेस कैसे कर पा रहे हैं ठीक है सो वो समझते हैं क्योंकि अकाउंट क्रिएट कैसे हो रहा है वो तो हमें समझ आ गया बिकॉज वेन एवर वी जस्ट गो टू द साइन अप पेज डिटेल हम फिल करते हैं और जो हमारा एक्सियोस मिडलवेयर है दे जस्ट सिंपली पास द फ्रंट एंड डेटा टू द बैक एंड ओके यूजिंग एन एक्सियोस ठीक है अब तुम्हें ये समझना अब हमें ये समझना आई हैव टू अंडरस्टैंड how the home page actually works because I use build this home page using an AI tools. Okay, mostly because I will know that how to just create this nav bar. This is an hashtag where we just write auth. That is a button.
and whenever we click on that button the cookies will be clear and you can just go to that home page. Okay, not a home page, just go to the sign up page and login page. And let's understand this get user function because this is the main function where a user can just go whenever user click it. Okay, so we just go and get user a async function. Okay, मैं तो एंटरटेनमेंट के लिए ही आया हूँ। आई विल लीव नाउ। मैं आता हूँ तो तू कोडिंग नहीं करता। बाय बाय एंड जस्ट you just need entertainment. So I think I should go to the live every single day on Sunday. ठीक है, संडे को मैं सोचता हूँ कि मैं लाइव जाऊंगा एंड वी हैव जस्ट लाइव Q&A करेंगे। ठीक है, बातचीत करेंगे। संडे इज स्पेशल फॉर जस्ट टॉक। ठीक है, संडे पे या तो नहीं तो 2-3 दिन में कर लेंगे, बट यू हैव टू जस्ट लाइक कि मैं पोस्ट कर दूंगा, तुम वोट कर देना उसके बिहाफ पे, हम करेंगे। ओके, अदरवाइज जस्ट कोड करते हैं। बाय द वे आई विल कंप्लीटली एग्री विद यू कि तुमने जो बोला ना आई विल लीव नाउ बिकॉज मैं आता हूँ तो कोडिंग नहीं करता। बाय बाय, आई कंप्लीटली एग्री, बट यू आर माय लॉयल व्यूअर ब्रो। I never forget your name because you are the first viewer that can interact with my almost every live streaming. So that's fine. Okay. संडे को मिलते हैं ब्रो, संडे को मैं लाइव करूंगा, बिल्कुल स्ट्रीमिंग करेंगे, सिर्फ बातचीत करेंगे। ठीक है, बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से एंड इट्स लाइक इट्स एन फंक्शन एंड ट्राई एंड कैच। ट्राई कैच एंड फाइनली। ठीक है, ट्राई कैच जस्ट लाइक कि ट्राई क्या करना है वेन एवर इट फंक्शन कॉल फर्स्ट ट्राई first implement first try to implement this code. If this code is not working, that's mean it is an error. We can handle this error from there, and finally will be set this thing. Okay, so finally is nothing, finally is the process between try error के बीच का जो प्रोसेस होता है ना, जब कोड चल ही रहा है हमें एग्जैक्टली आउटपुट नहीं पता, so we have just used the finally. Okay, and just like कि finally मैंने ना लास्ट टाइम यूज किया था बहुत पहले, so I will not sure what the use of finally. Just understand finally set loading false इसका मतलब क्या होता है? Just understand it. Okay, a good luck. Okay, you're right. Finally set false. ठीक है, what finally means? Finally means always run no matter what happen in try or catch. ठीक है, फाइनली का मतलब क्या है? इस डोंट केयर व्हाट इज हैपन इन ट्राई एंड कैच, इट इज यूज इनसाइड अ ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक। फुल स्ट्रक्चर ट्राई दिस सेट लोडिंग ट्रू काउंट्स रिस्पॉन्स व्हाट हैपन ट्राइज रन योर मेन कोड एपीआई कॉल सकता कैच रन इफ देयर इज एन एरर फाइनली रन ऑलवेज सक्सेस और एरर। ठीक है, रन ऑलवेज सक्सेस और एरर। ठीक है, मतलब कि सक्सेस क्या एरर क्या है? What we have set loading finally in React's loading and set loading used it for when calling an API before API set loading true, after API finish set loading false. Okay, so but what if API fail error happening? It's if you only put set false inside try, then case of error loading will stay true. So real example, you started cooking, loading is equal to mid, ठीक है, whether food become good or burn, success or error, ठीक है, you must turn off the gas, loading is equal to 4, that's turn off gas is finally. Okay, फाइनली इज जस्ट लाइक अ फाइनल आउटपुट। ठीक है, काम हुआ या नहीं हुआ, दैट्स इट, अच्छे से हुआ खराब से हुआ या नहीं हुआ, दिस इज अ फाइनल। ठीक है, दिस इज एन फाइनली। ओके, एंड लेट्स रन वंस व्हेन ऐप स्टार्ट। ओके, ये क्या होगा कि जब भी हमारी ऐप स्टार्ट हो रही है ना तो ये फंक्शन एक बार ही कॉल होगा, ये बार बार कॉल नहीं होगा क्योंकि वी हैव टू जस्ट फैच द डेटा फ्रॉम वन टाइम ना, वी डोंट नीड टू सेंड द रिक्वेस्ट टू द browser every time just send me a data, because we have to just send the request to the database only one time and it will be sent to the data. ठीक है, this will process will be too long but it not take time because it is a software na, it will be run faster than an average human machine. So set error। ठीक है, if server URL is not working, ठीक है, server URL नहीं है, so क्या है, missing byte confirm add it in a virtual environment where example, ठीक है, your render.com।
जस्ट लाइक कि अगर हमने इसको डिप्लॉय कर रखा है और अगर हमारा लोकल होस्ट अभी सर्वर हमारा करेंटली रनिंग नहीं है, तो ये जस्ट सिंपली क्या देगा कि तुम एक काम करो, जस्ट गो टू द, जस्ट वेट अ सेकंड, just said you take the, मतलब यही है कि मतलब तुम्हें डेटा चाहिए तो क्या है, या तो तुम्हारी वो चीज डेवलपमेंट फेज में होगी, अदरवाइज इट विल बी इन योर लोकल सिस्टम। ओके, डेवलपमेंट डेवलपमेंट में तो मतलब लोकल में है, नहीं तो प्रोडक्शन में होगी तो डिप्लॉयमेंट में होगी। इफ द प्रोडक्शन यूआरएल इज नॉट वर्किंग, प्रोडक्शन यूआरएल इज जस्ट लाइक अ रेंडर में हमने डिप्लॉय किया है, तो लोकल होस्ट पे काम करो, लोकल होस्ट काम नहीं करी तो उस पे काम करो, दैट्स इट, ठीक है। why not one why not anyone ask give me an answer of who has an extra class today? Is anybody? Smart people don't need extra class, है ना? Just write down something like that. Why not anyone who has any extra class today? किसी के पास किसी का एक्स्ट्रा क्लास नहीं है? हाँ। किसी के है तो यार कमेंट करो ना. Do you have anyone has an extra class today? Because everybody know. I'm talking about something, something, है ना? Something that missing in your life. बहुत missing तो काफी चीजें है ना, लेकिन फिर भी have just go live every single day. रिटर्न कर दो, ओके। अदरवाइज क्या है, वी हैव जस्ट सिंपली गो टू दैट काउंट्स डेटा एंड अवेट एक्सियोस डॉट गेट। सो हम क्या कर रहे हैं, देखो, वेन एवर जस्ट कि ये फंक्शन हम जाते हैं ना होम पेज पे, अब मुझे थोड़ा समझ आया कि एग्जैक्टली काम हो कैसे रहे, कि जब भी हम साइन अप पेज के अंदर जाते हैं ना एंड वी जस्ट पोस्ट द डेटा, तो जो हमारा ओल्ड डेटा है इट विल बी, यू कैन सिंपली नो आ फॉर्म डेटा, इट वी हैव जस्ट क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट एंड दिस इज फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, ओके, we have put the image as well, and here is the post where we can just simplify the header will be a content type, a multi-form data. It will just tell the server it is not an text data. We have also sent the image as well, okay, but in this particular sign up we have not add the image, so let's go to the logout and created a another account and send image as well. Okay, by the way, I will understand. I will create it in further soon. But if you have just try this account, I can just simply check it. Is anybody is created a new document? Okay, so we have two more user in that file. So let's see it and check it who is created and another. ठीक है, and जोशी, ठीक है, कन्नड़ जोशी ने अकाउंट क्रिएट किया है, ओके, एंड okay, so I okay, you have anybody a Kannad Joshi? We just created an account. Just write down, bro. Just write down. If you have created an account, just write down. Bro, if you are to learning a JS, I will be just prefer a YouTube channel, a virtual code. It will be teach you all the JS code from scratch to, मतलब scratch से मतलब basic से तुम्हें बिल्कुल advanced तक पढ़ा रखा है. If you are just live, just wait. I will just show you a YouTube channel. Okay, it will be an home page. It is a virtual code YouTube channel. Currently, I'm learning a backend from this YouTube channel, and this is an exactly what you need to learning, and exactly because it will be just teaching you the teaching method of this person is exactly a nice thing. If you have to learning a development, just simply go to that course, and this will be a entire completely web development course. I already know the front end completely, so I will just learning backend from that. So I will just, if you have to learning front end, I can prefer this YouTube channel. Otherwise, you can simply go to that coder army. This is an also a best YouTube channel. I'm learning a DSA from that, but you can all, if you have to learning a JavaScript, they will created a JavaScript full course. If you have a time, if you have a lot of time, because it will teach you in very point to point, because if you have a time to just 1 month, almost 1 month, ठीक है, 1 month में तुम्हें JavaScript सीखनी है, so I can prefer you this YouTube channel. Otherwise, if you have less time, just go to that virtual code, because it will, the length of that video is around
10 hour and it will be sufficient for you to learning the all. I just giving you this two YouTube channel. Okay, you can choose any one of them. Okay, you can choose any one of them because most teaching method is exactly you need to learning the coding. Okay, so if anybody using this created, I just they will created an account on the time Tera. It's just like okay, this account is almost already created and it's created into 26 so 14 and 5:13. No, 5:13 something like that. It's what it's giving a railway time or something. Just wait, I'm just creating this account and Solar 16. ब्रो I'm literally से बता रहा हूँ मुझे समझ नहीं आया कि क्रिएटेड का किस टाइम पे एग्जैक्टली बना क्योंकि अभी हैव जस्ट क्रिएटेड एन अकाउंट एट 11 a.m. and why it will show like this like just simply go to the chat GPT and ask it. Okay, okay bro, huh. I there you can simply just go to that any one of that YouTube channel if you have a time go to the which channel coder army if you have a less time go to the virtual code. Okay, and if you are still struggling to I have code step by step. This is also a best YouTube channel. This is underrated YouTube channel. I can also just send you कि श्रेयांश कोडिंग से भी पढ़ लो तुम चाहो तो श्रेयांश कोडिंग से पढ़ लो चाय और कोड से पढ़ लो they both are good YouTube channel but I will be just prefer न्यू कंटेंट ठीक है उनका थोड़ा जो 2-3 साल पहले का कंटेंट है सो अभी में जो क्या अभी ES5 आई है तो बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी है सो आई जस्ट प्रेफर यू कि तुम लेटेस्ट चीज पढ़ो ना जो अभी रिसेंटली आई हो सो इट्स डिपेंड ऑन यू कि तुम कहाँ से पढ़ना चाहते हो बाकी बोथ आर एक्चुअली अ ग्रेट यूट्यूब चैनल ओके सो जस्ट वेट and ask the chat gpt okay what is this is an ISO 8601 data time format a global standard for strong data time okay it is a ISO I will don't know anything but just like कि ये कुछ आज नया सीखा and just like कि this is a year this is a month this is an hour this is a minute this is a second this is a millisecond and this is a time zone so it will be shared 40 this will be 13:56 यानी कि the time zone will be 10:43 a.m. पे ठीक है it will account will state at 10:43 a.m. bro देख लो bro if you know if anybody knows what is an ISO 8601 data time format because I will listen first time this is an this format of date and time I have around 3 months in this duration I want to somehow land a service-based company job. Bro, if you have to land a good job, look, first thing you need to focus on the DSA. I will be realize this thing very late because if you go to the any interview, either it is a front end or a back end or a full stack, and most of the thing will be done by the AI, ठीक है? So वो तुम्हारा check करेंगे problem solving ability. So they just discuss, you just build a good project, applying it, and just try to learning DSA as well. I'm also learning DSA right now, but अभी मतलब DSA में basic array और linked list पढ़ रहा हूँ तो अभी वो चीज़ें तुम्हें बता नहीं सकता. So अभी for the from the next month I will also doing a DSA. एंड जस्ट लाइक यू डोंट नीड टू मास्टर द एंटायर डीएल से मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए उसके लिए तुम मतलब बेसिक से तुम्हें प्रॉब्लम क्वेश्चन करनी चाहिए जरूरी नहीं है कि अभी तुम लीड कोड ही ग्राइंड करने लग जाओ बिकॉज लीड कोड जस्ट एवरीवन सेड कि इफ यू हैव टू know the DSA just go to the lead code and grind lead code is not actually easy because if you are a completely new in coding and programming you just go to the lead code and you will have struggling to just understand the question bro तो तुम क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने में भी तुम प्रॉब्लम आ गई तुम्हें ठीक है सो आई विल ऑलवेज प्रेफर यू कि तुम पहले बेसिक से शुरू करो इफ यू हैव जस्ट कि तुम्हारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए देन जंप टू द advanced DSA concept okay and if you have less time and if you say just 3 months so I just prefer you a YouTube channel just wait you can simply go to the okay this is a YouTube channel code step by step ठीक है they will created a playlist currently I'm following this playlist okay the where is the DSA playlist it will be very old but it will be is the teaching method is very simple ठीक है
they just create build a playlist. Here you can see that a data structure and algorithm with JavaScript, ठीक है? तो तुम इससे पढ़ सकते हो, ठीक है? बहुत बेसिक से पढ़ा रखा है। 17 टोटल लेंथ अगर तुम लगो 17-18 घंटे का कंटेंट है। डीएसए का बेसिक तुम्हें पता चल जाएगा जावास्क्रिप्ट के थ्रू कितना नेसेसरी होता है। अगर तुम एक बेसिक सी मतलब एज अ फ्रेशर तुम जा रहे हो तो मतलब इतना इनफ है। इफ यू आर एक्सपीरियंस और यू आर completely fresher bro, from where you are learning DSA? Bro, I am learning DSA from currently I'm doing the DSA, and right now I'm targeting for a development job. So I don't need a heavy DSA if I'm target a startup company because I'm a fresher now. So I don't jump to the direct a big company right now. So I use this channel for a basic DSA concept, and also they have just created a playlist for DSA, not a DSA, for a problem solving question. So I just simply go to, and also revising which just wait. They have also creating a playlist of advanced JavaScript tutorial and a JavaScript interview question. ठीक है? अभी मैं यहाँ से पढ़ूंगा बट इन द नेक्स्ट मंथ आई विल गो टू द कोडर आर्मी बिकॉज आई हैव ऑलरेडी completed मतलब डीएसए का मैंने इस तरह से काफी चीजें पढ़ रखी है बट इन द लास्ट ईयर सो आई नीड अ रिवीजन सो इट विल टेक टाइम सो आई जस्ट फॉलो दिस इफ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम लॉट ऑफ मतलब तुम्हारे पास कम से कम 1 साल है ठीक है तो आई जस्ट सिंपली प्रेफर दिस यूट्यूब चैनल फॉर द मास्टर डीएसए कम्प्लीटली ठीक है दिस इज एन कोडर आर्मी यूट्यूब चैनल जस्ट वेट एंड हियर इट इज अ डीएसए प्लेलिस्ट विद सी प्लस प्लस ठीक है मुझे सी प्लस प्लस भी अच्छे से आती है आई एम जस्ट व्हेन आई हैव जस्ट जॉइन द इंस्टीट्यूट आई हैव लर्निंग so many things from that so I will refer you this YouTube channel if you have to struggling in DSA if you have a lot of time just go to this playlist you can also follow अपना college love bumper iStriver but it depends on you ठीक है resources बहुत सारे हैं तुम सबको थोड़ा थोड़ा ट्राई करो और which one you like just follow it ठीक है बार बार ज्यादा चेंज भी मत करना करो ठीक है okay I am a fresher and I know man should I necessary for me to do Next.js also bro actually you need a Next.js because I'm a fresher and I know man should I necessary for me to Next.js also bro देखो first thing you need to understand it if you go to the job market they will always want before I'm just giving answer you know the TypeScript you know what is how the TypeScript work if you already know the TypeScript just comment down you know TypeScript because in the last round I have also completed a one stack and I'm applying for an interview and I got rejected because I don't learning TypeScript because I'm building a entire application using a JavaScript React. So they just want कि आपको TypeScript आनी चाहिए and that's why I got rejected in that interview. No, I don't know TypeScript bro. हाँ bro, अगर तुम्हें TypeScript नहीं आती है ना तो देखो TypeScript is necessary right now if you want to becoming a developer. If you are target a startup company, so maybe they would don't need but ऑल ओवर ऑल जब हमें कोड की फ्लेक्सिबिलिटी क्या बोल रहा हूँ मैं स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं तो हम टाइप स्क्रिप्ट को करते हैं हमें केस चीजें होती है काफी चीजें होती है मतलब टाइप स्क्रिप्ट मैंने खुद नहीं पढ़ी थोड़ा बहुत मेरे को आइडिया है कि मतलब वेरिएबल को डिफाइन करना होता है हमें पहले की चीजें ना हो तो मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज होती है दे जस्ट वांट यू कि आपको टाइप स्क्रिप्ट आनी चाहिए एंड तो नेक्स्ट जेएस भी तुम सीख सकते हो इफ यू ऑलरेडी नो द वन स्टैक सो यू नो कि हाउ द नोड जेएस में बैकएंड कैसे काम करता है ठीक है राउटिंग क्या होती है तुम्हें तो अगर तुम नेक्स्ट जेएस सीखने के लिए जाओगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा तुम्हें नेक्स्ट जेएस भी सीख लो नेक्स्ट जेएस की वजह से तुम ना एक नेक्स्ट जेएस एक ऐसा फुल फ्रेमवर्क है जिसके तुम फ्रंट एंड बैक एंड दोनों को हैंडल कर सकते हो तो जस्ट लर्न Next.js. I don't think if you already know the React.js, you need only 1 month to learning a Next.js. ठीक है उसके साथ TypeScript भी तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा Next.js पढ़ोगे तो TypeScript भी तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा ठीक है and if you are also using AI tools to building a web application you know कि they will be just giving a good code using a TypeScript ठीक है so TypeScript तो necessary है bro तुम्हें पढ़ना पड़ेगा मैं भी TypeScript अभी पढ़ रहा हूँ क्योंकि अभी Next.js I will be starting the Next.js from Monday okay सो आई थिंक देयर सो मेनी चांसेस कि मैं नेक्स्ट ईयर जो पढ़ूंगा सो मैं रिवाइज भी करूंगा सो मैं तुम्हें बताऊंगा जरूर ठीक है आई एम यूजिंग का रिसोर्सेज कि मैं रिसोर्सेज वर्चुअल कोड को ही फॉलो करूंगा बिकॉज आई विल सी अ वेरी गुड रिव्यू ऑफ दैट यूट्यूब चैनल ठीक है मतलब मेरा एक फ्रेंड है दे हैव आल्सो कंप्लीटेड अ नेक्स्ट ईयर
यूजिंग दिस चैनल एंड दे जस्ट प्रेफर दे जस्ट कि उसने भी मुझे प्रेफर किया कि वर्चुअल कोर्ट से पढ़ अच्छा पढ़ाता है, सो आई जस्ट चूज दिस चैनल फॉर द नेक्स्ट ईयर. ओके, so if you have, you can learn with me, bro. If you have just try, if you just think कि मैं next year पढूं, so just go with me and just learn the TypeScript as well. I'm a final year student and placement time. I had to focus for campus placement. Okay, if you are focused on a campus placement, you need to focus on DSA right now. अगर कैंपस में हो रही है तो ब्रो, व्हाट्स योर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, क्वालिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग कैसा है तुम्हारा? बिकॉज आई एम डूइंग अ BCA फ्रॉम अ डिस्टेंस कॉलेज, सो आई डोंट हैव ऑन कैंपस. आई एम गोइंग फॉर ऑफ कैंपस because on campus company नहीं आती distance college में. You have to just find it with you, find alone. Just focus on building good projects and focused on a DSA. That's the only thing you need. Okay, bro. You just need to focus on a DSA and development. And what is your communication skill, bro? And I think just like कि communication is, पहले के टाइम पे communication को इतना preference नहीं देते थे, but right now the communication is so much important if you are just targeting a good tech companies. Because almost if you are targeting good company, they will take an interview a 3 round or 4 round, and if you have a great communications and average skills, you can crack the interview. I know basic but don't that much strong in aptitude, but I am also doing DSA. Okay, so you are also doing a DSA and तुम्हारा strong नहीं aptitude में, तो bro just make the strong aptitude, ठीक है? क्योंकि ऑन कैंपस में तो पूछते ही है मोस्ट ऑफ द टाइम, जितना आई नो कि मेरे कुछ दोस्त है बीटेक से, कुछ आईपीयू के बंदे हैं. बाकी विच कॉलेज आर यू परस्यूइंग, बीसी और बीटेक? आई एम ए बीसी स्टूडेंट बाय द वे. विच यू आर स्टूडेंट, यू आर अ बीसी और बीटेक और बीएससी, एंड विच यूनिवर्सिटी आर यू फ्रॉम स्टूडेंट्स? बिकॉज ऑन कैंपस में अभी मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो हायरिंग कर रही है वो ऑफ कैंपस में जाती है. ऑन कैंपस तो हायरिंग काफ़ी कमी हो चुकी है. टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, इस टाइप की कंपनी तो मिल जाती है वैसे ऑफ कैंपस में. ऑन कैंपस में जस्ट वेट, आई एम गेटिंग अ कॉल. ओके, so if you just have any question, just write down. I will be just replying soon. Just before, just I need to cover it this project revision as well, because I will be just delaying this project for the last few days. Because 3 दिन से मैं कह रहा हूँ कि इसको रिवाइज करूंगा, लेकिन 1 slot में नहीं हो पा रहा. Already I have left a 1 hour. I am a BTech CSC AQ AKTU. I think this university is not in Delhi, so I don't know what is. Okay, it's like अच्छा, you are a Dr. APJ Abdul Kalam University. Okay, this will be located in Delhi, na bro? दिस इज अ गुड कॉलेज ब्रो. तो ऑन कैंपस पे अच्छी खासी, मेरा एक फ्रेंड ऑलरेडी पढ़ता भी है इसमें. बीटेक CSC फ्रॉम AK. ओके, APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी. ओके, अच्छा, दिस यूनिवर्सिटी इन यूपी. यूपी नोएडा साइड ब्रो, इन नोएडा. आई थिंक नोएडा की तरफ ही है शायद, जितना मेरे को पता है. हाँ भाई, एक लाइन कोड भी नहीं लिखा. भाई एक लाइन भी कोड इसलिए लिखा बिकॉज आई बिल्ड दिस एंटायरली प्रोजेक्ट. आई एम डूइंग CDC पुणे, दिल्ली NCR गाजियाबाद में. अच्छा, गाजियाबाद की तरफ है. ओके, बीटेक स्टूडेंट मतलब यार ऑन कैंपस पे हायरिंग हो जाती है वैसे. बाय द वे, यू हैव डूइंग एनी हैकाथॉन और इंटर्नशिप? मतलब देखो, एज अ डिस्टेंस कॉलेज स्टूडेंट, सो इफ आई एम जस्ट गो टू द अप्लाइंग फॉर अ टेक जॉब, सो मैं स्ट्रगल करता हूँ बिकॉज आई एम डिस्टेंस कॉलेज स्टूडेंट. सो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड व्हेन आई गेटिंग अ चांस, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे स्टार्टअप कंपनी मिलती है और लाला कंपनी मिलती है.
एवरीबडी नो हु इज लाला कंपनी। लाला कंपनी से बच के रहना हमेशा तुम, लाला कंपनी से। व्हाट यू आर, आई एम डूइंग अ CDAN। व्हाट इज अ CDAC? पुणे। डिफरेंट ब्रांचेस इज, ओके, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। No, actually, I don't have any idea about CDAC, so I just won't give any suggestion. By the way, if you have a computer science student and doing coding, just do, bro, MTech कर लो। ब्रो MTech कर रहा हूँ CSE से, प्लेसमेंट जीरो है, प्लीज सजेस्ट करो। ब्रो देखो, सजेशन क्या है, इन करेंटली जॉब मार्केट, इन टेक जॉब मार्केट, पता है क्या है? डिमांड है ऐसे, ठीक है, और सप्लाई है ऐसे, ठीक है। जब तक कोडिंग ना अंडर रेटेड थी बिफोर द कोविड, ठीक है, तब तक ही टेक जॉब उतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। लेकिन जब से ना बूम आया ना टेक का, कि मतलब कोडिंग में सब चीज़ें, मतलब जब कोविड आया था, मोस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज बंद हो गई थी। तो टेक बंदे जो थे ना, वो घर बैठे काम कर रहे थे। लोगों ने इस चीज़ को तब इतना हाइप आया ना, ML में जाओ या वेब डेव में। ब्रो देखो, ML या वेब डेव में, देखो वेब डेव तो पता है क्या चीज़ है? इफ़ यू जस्ट गो टू द एनी टेक कंपनी, दे जस्ट एक्सपेक्ट करते हो तुमसे कि बेसिक वेब डेव तो आना ही चाहिए तुम्हें, ठीक है। बिल्कुल एडवांस का टॉप नॉच चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट तो थोड़ी बहुत आनी चाहिए हर किसी को, ठीक है। इफ़ यू आर बिल्डिंग ML एंड तुम अगर प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, तो तुम्हें प्रोजेक्ट्स को शोकेस करने के लिए भी थोड़ा बहुत तो ML आना चाहिए ना, थोड़ा बहुत। AI ML कर रहे हो, तो एक्चुअली यू नीड समथिंग, तो बिल्डिंग तो थोड़ा बहुत बेसिक में डेवलप आना चाहिए तुम्हें। ML में जाओ, बाकी ML इज द बेस्ट करियर पाथ। एंड ब्रो MTech कर रहा हूँ, प्लेसमेंट जीरो है, तो प्लीज सजेस्ट करो। देखो, वर्किंग ऑन योर स्किल्स, शो केस, लर्न इन पब्लिक। देखो जैसे मैं अभी लर्न इन पब्लिक क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने अभी जस्ट अपनी मर्ज कंप्लीट करी। आई एम नॉट अ कम्प्लीटली मास्टर, आई एम कम्प्लीटली अ प्रो पर्सन, ठीक है, कि मेरे को डेवलपमेंट बहुत अच्छे से आती है। आई एम जस्ट क्रिएटिंग एन अकाउंट ऑन लिंक्डइन and go live every single day. So I just learn in public, and you can so visit my YouTube channel where I just created a daily mini vlog कि आज मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। बिकॉज ना इसी से क्या होता है कि अगर जैसे अभी हमें लेट सब्सक्राइबर, बट अगर मैं थोड़ा ग्रो करूंगा, थोड़े व्यूज आते हैं, सब्सक्राइबर आते हैं, तो लोग मेरे साथ कनेक्ट करते हैं। सो एक्टिंग की उनमें मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, जो मुझे, क्योंकि लर्न इन पब्लिक इज अ वेरी गुड थिंग। मेरे नोन में कुछ दो तीन बंदों को मिली है लर्न इन पब्लिक। वो क्या करते हैं बेसिकली, दे जस्ट गो लाइव एवरी सिंगल डे, ठीक है, not go live every single day on this YouTube. They're just working and showcase their प्रोजेक्ट ऑन अ लिंक्डइन, ठीक है। और वहीं से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ठीक है। तो अगर तुम्हें स्किल्स आती है तो उसको शो केस करो कहीं पे भी, मतलब तुम्हें मिल रहा है हैकाथॉन में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वहां ज्वाइन करो। कोई इवेंट्स हो रहे हैं, वहां जाओ। और कभी तुम क्या कहते हैं, लिंक्डइन वगैरह पे जाते हो, वहां तुम पोस्ट करो। हर जगह अप्लाई करो बल्क में, तभी तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर तुम्हें स्किल्स आते हैं, इफ यू जस्ट लाइक कि तुम्हें कुछ भी कितना अच्छा से अच्छा काम आता हो, इफ यू डोंट नो हाउ टू शो केस, तुम्हें शो केस करना नहीं आता, सो आई डोंट थिंक कि अपॉर्चुनिटी मिलना इतना आसान है तुम्हारे लिए। So I just choose this method. You can also choose this method if you are if you are a developer, if you are learning, just go live every single day. डॉक्यूमेंट करो अपनी चीज़ों को, अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करो। दिस इज द बेस्ट थिंग, ठीक है, जस्ट डॉक्यूमेंट करो, ठीक है। बिकॉज अपॉर्चुनिटी तो ऐसे ही मिलेगी, देखो बाकी हर किसी का अपने अपने तरीके हैं। हर किसी को जरूरत नहीं है कि यूट्यूब चैनल पे आए और फिर यूट्यूब चैनल बनाए और लर्न इन पब्लिक करे, ये करे। बट जस्ट लाइक कि तुम्हें जहाँ से मौका मिल सका है, जहाँ से तुम हाथ मार सकते हो, तो हाथ पाँव मारना शुरू करो। तो मैंने एक मेथड यूज़ किया, ठीक है। ब्रो MTech कर रहा हूँ, CSE से, प्लेसमेंट जीरो है ना, तो इसका सबसे सिंपल तुम्हें बता रहा हूँ ब्रो, अपना काम शोकेश करो। तुम MTech में आ चुके हो, मेरे हिसाब से MTech तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी तुम्हारे पास। तो एट द एंड जब तुम कंपनी में भी जाओगे, सोने भी एक टाइम पे तुम्हें जवाब देना पड़ता है कि यार तुमने MTech किया है, तो तुमने उससे पहले तुम क्या कर रहे थे, मतलब तुम्हें एग्जैक्टली क्या तुम्हें आता है क्या नहीं आता, तो तुम्हें उस चीज़ को भी प्रूफ ऑफ वर्क तुम्हें देना पड़ेगा। तो प्रूफ ऑफ वर्क यही सब चीज़ें होती है, जस्ट शोकेस योर वर्क हर चीज़ में। इस मंथ मैंने ये बनाया, इस साल मैंने ये बनाया, मैंने ये प्रोजेक्ट बनाए। लिंक्डइन पे लिखो, ट्विटर पे जाओ, हर जगह जस्ट, ठीक है। And I'm just like I'm also a BCA student, and I'm currently in a sixth sem, and it is my final year, and I'm just कि यार ये चीज़ है मुझे बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, बट आई एम गेटिंग टू लेट, बट आई एम स्टिल जस्ट नॉट वेस्टिंग एनी टाइम इन दिस 2026 बिकॉज इट्स माई ईयर। एंड आई वांट कि अगर तुम भी हो तो इस साल को अपना ईयर बनाओ, ओके। जस्ट स्टार्ट समथिंग एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग। और तुम्हें स्किल्स आती है तो शोकेस करो, लर्न इन पब्लिक करो, बिकॉज दिस इज द ओनली मेथड you need in 2026 to getting a job, okay। गुड आइडिया, हाँ ब्रो, दिस इज अ वेरी ब्रो आइडिया। मतलब मैं तुम्हें वही दे रहा हूँ कि ना, तुम्हें चाहे कितनी भी अच्छी स्किल आती हो, अगर तुम शोकेस नहीं कर पा रहे,
तो कोई फायदा नहीं। अब मैं तुम्हें एक बेसिक सा एग्जांपल दूं, अपना आइडिया दूं। देखो मैं हूँ, आई एम अ फिटनेस फ्रीक, ठीक है। मैं कंप्लीटली फिटनेस फ्रीक हूँ। एंड मेरा इंस्टाग्राम पेज भी, जहाँ पे मैं फिटनेस रिलेटेड वीडियो डालता हूँ, ठीक है। अब मैं जिम गया था, तो मेरा एक जिम बंदा है, ठीक है, जहाँ मैं जिम जाता हूँ। यार जिम बंदा क्या बोलूँ मैं तुम्हें। लिंक्डइन आईडी देना अपना, ब्रो आई हैव जस्ट मेंशन माय लिंक्डइन आईडी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। नॉट अ कमेंट सेक्शन, नो डिस्क्रिप्शन, ब्रो आई जस्ट क्या बोल रहा हूँ, ज्यादा ही बोल बोल के हो गया मतलब। सो वहाँ पे जिम वाला बंदा था मेरा, ठीक है, हनी भारद्वाज। इट इज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर, दे हैव अ मोर देन 36,000 सब्सक्राइबर्स, ठीक है। एंड वो ऑनलाइन कोचिंग देता है, एंड जस्ट विनिंग मिस्टर इंडिया इन बॉडी बिल्डिंग, और काफी अच्छा खासा कंपटीशन जीत चुका है, काफी अच्छा बंदा है, ठीक है। तो उसको मतलब अपना वो करना था, प्रमोट करना था थोड़ा ऑनलाइन बिजनेस को। ऑनलाइन बिजनेस की मतलब वो ट्रेनिंग दे सके, वेट गेन, एज अ जस्ट ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनर, ठीक है। तो उसको उसका काम करना था, तो मैंने उससे बोला कि ठीक है, मैं आपके लिए प्रोजेक्ट बना दूंगा, आपके लिए वेबसाइट बना दूंगा। मुझे भाई क्लाइंट मिला। मैंने क्या किया, मैंने उसको सामने से क्या अप्रोच किया। मैंने उसे बोला कि यार आप ये सब काम करते हो तो एक्चुअली आपको नीड होगी। तो जब तक तुम मतलब बोलोगे नहीं, किसी के साथ करोगे नहीं, तब तक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जस्ट ट्राई करते रहो, ठीक है। एंड बस इफ यू आर, मैं तुम्हें यही बोलूंगा ब्रो, जस्ट ट्राई करते रहो, ठीक है। ये हाथ पाँव मारना शुरू करो, और अपना काम है उसको लर्न पब्लिक करो। हैकाथॉन होते हैं बहुत सारी जगह, कहीं भी तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिले, चाहो हैकाथॉन में, नेटवर्क बनेगा। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, दिस इज माय सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ, दैट आई विल डूइंग अ पीसीए फ्रॉम अ डिस्टेंस कॉलेज स्टूडेंट, डिस्टेंस कॉलेज, ठीक है। बिकॉज यू आई हैव नॉट अ गुड कनेक्शंस, ठीक है, मेरे पास कनेक्शंस नहीं है। मेरे पास अगर कोई दोस्त भी है, तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेक, दे जस्ट डूइंग अ बीसीए फॉर जस्ट लाइक अ डिग्री, ठीक है। एंड इफ यू आर doing a regular college, so just find the person like who just want a job, उनके साथ मिलके काम करो, just learn in public करो, and that's it, ठीक है। and you don't need anything, you have to just need this, ठीक है। and if you're just sending my LinkedIn request, it's okay, I will accept the request after the swimming session, okay। I'm just now just go to my project, okay। Thanks everybody, I've completed the 850 subscribers, okay, 850 subscribers. It is not so much, but still it is showing me I will be progress every single day. Maybe it's little, but it will be visible, है ना? So so let's refresh it. I want to just check it. Is anybody creating an account? Currently, I have an 11 user. Okay, so we have seen that one user is also created. Just go to the VDebugger. Okay, you have just created an account pro VDebugger. ठीक है? Okay, your account is successfully created. ठीक है, bro? Just now build a project. ठीक है? I think I have just काफी ज्यादा ही मैं बोलने लग गया, काफी ज्यादा ही मोटिवेशन दे दिया है, काफी ज्यादा ही मतलब बोलने लग गया है ना। जस्ट बिल्ड अ प्रोजेक्ट, ठीक है। सो इट इज इन आवर फंक्शन। मेरे को समझ आया कि मतलब साइन अप पेज पे हम कैसे काम करते हैं। जैसे देखो, व्हेन एवर वी जस्ट क्लिक ऑन साइन अप, ये यूआरएल है Axios, everybody know, not everybody, Axios is just like work as a middleware that help us to communicate to the one port to another port, ठीक है। You can see this port is different. If you just try to send this data to another, it will be not showing to you because of your both port is running on different port, okay। So we have used this Axios middleware, so they both can communicate simply easily, okay। and this is in a header where we just define that we have tell the server we are not just sending text, okay। bro, if you have to also, if anybody is live, you just need this code, you can simply go to the my repo, okay, go to my repo, and you can access it, this this you can access it, this streaming session, okay। You don't need to worried about, okay, bro। So if anybody access want this Git repo, you can simply go to the my GitHub repository, and here you can just find the ultimated backend repository. Whenever you just click on, there is a folder of authentication. Here you can access it. Just access this code and read it, because in 2026 you don't need to write everything
by yourself. You just ask the chat GPT, they will write the code, but you just need to understand. So you just read the code a lot. Okay. The more you code read, the more you learn and understand how the actually thing works. ठीक है, so let's like कि देखो set क्या है, हमने set यूजर को हमने क्या कर दिया, ठीक है। जब भी हमने ये करा ना, so हमने फॉर्म डेटा को हमने भेज दिया इस सर्वर पे। फॉर्म डेटा इट इज एन ऑब्जेक्ट, वी हैव जस्ट सिंपली पास इट। ठीक है, पोस्ट का मेथड क्या होता है, पोस्ट कर दिया हमने इसमें। एंड विद क्रेडेंशियल ट्रू क्या कर दिया, अलो कुकीज टोकन टू बी रिसीव्ड। ओके। एंड हेडर क्या है, कंटेंट टाइप मल्टी फॉर्म डेटा, टेल सर्वर वी आर नॉट जस्ट सेंडिंग टेक्स्ट। ओके। हेडर क्या है, कंटेंट ऑफ टाइप मल्टी फॉर्म डेटा, टेल सर्वर वी आर नॉट जस्ट सेंडिंग टेक्स्ट। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमने अभी इमेज पास नहीं करी, लेकिन इमेज भी पास हो सकती है ना इसके अंदर, तो हम अगले में पास करेंगे। सेट यूजर इमीडिएटली फ्रॉम साइन अप रिस्पॉन्स। ओके, सेट यूजर डेटा। ठीक है, जैसे ही साइन अप हो जाएगा ना, सेट यूजर डेटा को क्या कर दो, हमने ना सेट यूजर डेटा इज अ फंक्शन। ठीक है, सेट यूजर डेटा एक फंक्शन है, यहाँ पे हमने कॉल किया है इसको। ठीक है, सेट यूजर डेटा एक फंक्शन है, हमने इसको कॉल किया है। ठीक है, और ये हमने फंक्शन को इम्पोर्ट कहाँ से किया है, यूजर कॉन्टेक्ट से। ठीक है, सो जब भी हमने इसको फंक्शन को कॉल किया, इसमें क्या किया, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूजर रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक है, तो क्या हो गया, रिस्पॉन्स क्या कर दो। अब हम जाते हैं यूजर कॉन्टेक्ट पे। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने एक फंक्शन अपना असाइन कर रखा है कॉन्स्ट का डेटा, जस्ट लाइक कि सेंड रिक्वेस्ट टू द बैकेंड टू चेक इफ वी हैव अ वैलिड कुकीज। ठीक है, तो हम इसके अंदर कुकीज पास मस्ट बी ट्रू टू सेंड द कुकीज, तो ये कुकीज पास करता है उसके अंदर और वैलिडेट करता है। इट विल बी वैलिडेट इफ इट इज एन वैलिड कुकीज, दे जस्ट सिंपली इफ इट सक्सेसफुली जस्ट अपडेट स्टेट ऐप knows we are logged in, set user data। ठीक है, set user data को क्या कर दो, डेटा डाल दो उसके अंदर। एंड इन दिस पर्टिकुलर डेटा we have data like यूजर नेम ईमेल एंड उसका पासवर्ड। ठीक है, एंड कैच एरर में हम यहाँ पे आते हैं, तो वी हैव जस्ट एरर डॉट रिस्पॉन्स स्टेटस 401 सेट यूजर डेटा नल। ठीक है, अब एरर आता है एल्स एरर फैचिंग यूजर एरर, और फाइनली पे सेट लोडिंग कर दो, रन वंस यूज इफेक्ट। ठीक है, तो फंक्शन एक ही बार कॉल कि वी हैव टू सेंड द रिक्वेस्ट टू द डेटाबेस ओनली वंस टाइम बिकॉज वी नीड डेटा। ओके, एक बार हमने अगर डेटा हमारे पास ही आ चुका है, सो व्हाई वी नीड टू सेंड द रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन। ओके, by the way, anybody is not giving an answer of who has an extra class today. Why not is nobody has an extra class today? मेरी आज एक्स्ट्रा क्लास नहीं थी, मुझे लगा और रुकी होगी, बट नो वन जस्ट गिविंग एन आंसर ऑफ who is an extra class today. It is a 14 Feb and nobody had an extra class today. Just give me some Sigma replies, na bro. Just chat reply, chat Sigma, Aura, a fancy Instagram trending words that everybody mostly use. Okay, run one when the user, और क्या है, if config.error रिटर्न क्या कर दो, डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन नीडेड, ये हमारा एरर का है ना। ठीक है, प्रोवाइड द स्टेट एंड फंक्शन टू बी रेस्ट द ऐप यूजर प्रोवाइड। ठीक है, प्रोवाइड द स्टेट एंड फंक्शन टू द सर्वर। ठीक है, या तो हमें वैल्यू पास कर दिया कि हमने जो सर्वर यूआरएल बनाई, यूज डेटा, सेट डेटा, फंक्शन लोडिंग, जितनी भी हमने चीजें बनाई है ना, हम इसको यहाँ पे पास कर दिया 1 2 3 4 5 थिंग्स। एंड हियर वी कैन सी द अवर 5 थिंग, गेट यूजर डेटा, कॉन्फ़िगरेशन, एवरीथिंग वी हैव जस्ट सिंपली पास टू द particular that storage box, and we pass this user context to anyone files and use it without passing a props. Okay, now we just understand how the lineup is. Live can see only one pin comment. That's your live link. Chat GPT की Chat GPT की है with cursor. I use the anti-gravity tool, bro. Anti-gravity. This is the new tool, new code editor tool that will be given by live. Can see only one pin comment. That's you need in your live project. Okay. So I just explain the comment, and if you just need it, just go to the description. Okay. Bro is just now giving an question of
with an extra class today because I just need an answer because ठीक है, it is on Saturday. I've already revised the most of the topics. I just need to just give me an answer. I just want to just give me an answer. Is anybody an extra class today? Bro, I using anti-gravity. By the way, I use almost every tool, every AI tools like a Claude, a Cursor, a V0 Dev, Lovable. I almost use every code editor and AI tool to building an application because you have to know, you need to know everything, ना? हर चीज पता होनी जरूरी है. Is now everyone showing the question of today's questions? If yes, just write down. Okay. So we should understand how we can create a sign up page. ठीक है. We also understand how to एक्सेस अ होम पेज. ओके, होम पेज का एक्सेस हमने समझ चुके हैं लगभग. ठीक है, अब थोड़ा होम पेज को भी समझते हैं. ठीक है, क्योंकि यूजर कॉन्टेक्ट से तो हम समझ आ गए कि यूजर कॉन्टेक्ट कैसे काम कर रहा है. हाउ द होम पेज इज एक्चुअली वर्क. ठीक है, कौन यूजर डेटा, सेट यूजर डेटा, सर्वर यूआरएल ऑर्डर. ठीक है, ये सब वी हैव जस्ट इंपोर्टेड दिस फ्रॉम दिस यूजर कॉन्टेक्ट. ठीक है, एंड navigate is the thing कि just whenever you a user click on sign up page, a login page, they can redirect to a login router. ठीक है, and if not login, go back to login, prevent infinity loading on deploy. Okay, if login नहीं होता है तो just prevent कर दो क्योंकि ना loading का एक बार आएगा जो कि कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं. ठीक है, just like a infinity loading on deploy. Use effect if loading, if not loading कर रहा है, और अगर not एट यूजर कह रहा है नेविगेट को लॉगिन पे डाल दो. ठीक है, सिंपल है. ठीक है, और वहाँ पे क्या कर दो, लोडिंग यूजर डेट और नेविगेट कर दो लोडिंग पे कि होम पेज पे रहेगा लेकिन डेटा कुछ भी विजिबल नहीं होगा. और हैंडल लॉगआउट पे क्या होगा, whenever user click on handle logout, here you can see that a button a logout. ठीक है, here you can see that, and whenever user click on that logout button, await exhaust dot post server url dot api पे जाएगा और विद क्रेडेंशियल को ट्रू कर देगा जिससे कुकीज जो है वो उसके अंदर पास तो हो रही है. और सेट क्या कर दो, यूर डेटा को नल कर दो. यूर डेटा को नल करते क्या कर दिया, नेविगेट को लॉगिन पे कर दिया, कैच एरर कर दिया और फील्ड एरर. ठीक है, भाई ये क्या है, इसके अंदर तो कुकीज को क्लियर ही नहीं किया. क्लियर कुकीज कैसे होगी. some whenever I just click on this route will be called. ठीक है, हम जब भी इस पे लॉगआउट पे क्लिक करेंगे ये राउट हो जाएगा वहाँ पे, और विद क्रेडेंशियल को ट्रू कर देंगे तो कुकीज तो पास हो रही है लेकिन कुकीज डिलीट कैसे हो रही है. आई थिंक इट विल बी डिलीटेड इन यूजर कॉन्टेक्स्ट. वी हैव जस्ट बिल्डिंग अ फंक्शन ऑफ हैंडल लॉगआउट. वेयर इज हैंडल लॉगआउट फंक्शन. हैंडल लॉगआउट का हमने फंक्शन कहाँ बनाया था, हैंडल लॉगआउट जस्ट लिख के आई थिंक वी हैव जस्ट असाइन इट इनटू एन लॉगआउट. वेयर इज लॉगआउट. हैंडल लॉगआउट तो ये है, लेकिन इसके अंदर कुकीज कैसे क्लियर हो रही है ये समझ नहीं आ रहा. Does anybody have a question related to any one question? Just write down. ठीक है, I am just here to reply all your questions. Okay. सेट यूजर डेटा है ना, हमने इसको देखना है कि सेट यूजर डेटा हमारा का है यूजर. ठीक है, और सेट यूजर फंक्शन को हमने कैसे डिजाइन कर रखा है. इफ सक्सेसफुली अपडेट स्टेट एग्नोज स्टेट. सेट यूजर डेटा का गेट यूजर डेटा तो ये रहा. इसको नल कर दो. ठीक है, यूजर डेटा होगा लेकिन जब हम लॉगआउट पर क्लिक करेंगे ना तो उसकी वैल्यू नल हो जाएगी तो कुकीज क्लियर हो जाएगी. It is an object that I have created है ना, whenever we click on sign up.
लॉगआउट पे कुकीज तो पास हो रही है, लेकिन कैसे पास हो रही है? एनीबॉडी जस्ट वाचिंग द कोड, जस्ट कैन यू एनीबॉडी नो व्हाई दिस कुकीज इज क्लियर? क्योंकि मैंने यहाँ पे तो साइन अप पे कुछ बनाया नहीं है। अगर रिक्वेस्ट पास हो रही है बैकएंड में, तो आई थिंक नीड टू चेक द बैकएंड कोड। So just go to the backend code, and here is we I can just simply go to the set user function का कॉल कर रहा है ना। तो सेट यूजर डेटा को नल करते के साथ ही ना एपीआई रिक्वेस्ट क्रेडेंशियल फॉल्स हो जा रही है। ठीक है। सेट स्टेट लोडिंग, वेट फॉर यूजर डेटा टू लोड, रिटर्न एंड इट इज लोडिंग, रिडायरेक्ट टू लॉगिन पेज। लॉगिन पेज समझ तो आ गया, मतलब कि होम पेज कैसे हो गया। होम पेज पे हमने समझ आ गया डेटा पास होता है, एंड वेर एवर वी जस्ट सिंपली नीड टू जस्ट थ्रो द वॉक थ्रू। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू यूज द थिंग दैट आई वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द कोड फ्लो। क्या हो रहा है यहाँ पे? हाउ द होम पेज वर्क। दिस होम पेज इज अ प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ योर ऐप। हियर इट इज अ लाइफ साइकिल, आर डेटा डॉट और यूजर डॉट कैट। The home page does not fetch its own data. Instead, it subscribe it to the data context. When the app start, user context run on a use effect that call API get user. If the backend find a valid session cookies, it return to the user data. Name, email, profile, image. Okay. This data is stored in the user data state with the context, access control, the protection inside home.js. This is the security check. Okay. If loading is finished and use data is still null, page is automatically kick with the user back to the login screen। यहाँ पे क्या यूज क्या यूज इफेक्ट में हमें क्या कर दिया? इफ लोडिंग एंड यूजर डाटा इज नेविगेट, अगर नहीं है ना ये मतलब ये चीजें, तो नेविगेट कर दो, और हमें क्लिक करेंगे तो हमें फंक्शन कॉल हो जाएगा। ओहो, फाइनली आज किसी ने मेरे से मेरे दिल का हाल पूछा। सब बढ़िया, आज किसी ने मेरे दिल का हाल पूछा ब्रो। अभी भी वैलेंटाइन पे प्रोजेक्ट बनाते हैं ना ब्रो कुछ। नहीं ब्रो, आई एम अ सिंगल। ठीक है, अखंड सिंगल हूँ मैं। एंड आई जस्ट लाइक कि आई वेस्टेड ऑलमोस्ट 1.5 आवर, मतलब 1.5 साल मैंने अपना वेस्ट किया है इस चीज पे। एंड दैट्स व्हाई आई एम डूइंग। मैं ये चीज ना 1.5 साल पहले खत्म कर सकता था अपनी वेब डेवलपमेंट अच्छे से। एंड आई जस्ट वेस्ट माई एंटायर 1 साल से ऊपर तुम कह सकते हो इस चीज में मैंने अपना टाइम वेस्ट किया। बिकॉज लेट्स लाइक कि कहते हैं ना, पहला पहला जो होता है उसमें तुम्हारे साथ क्या होता है। अब बाकी तो यार दुख है, दुख दुख सुनाने बैठूंगा तो फिर आज ब्रो बस है ना। अब दुख सुनाने बैठूंगा तो यार तुम तो फिर पता ही है। समझ सकते हो मतलब कि इफ यू आर जस्ट गोइंग टू द एनी रिलेशनशिप, इफ यू हैव जस्ट कि मतलब कभी तुम पहले रिलेशनशिप में पड़े हो, तुम्हें पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। बताओ, इज एनीबॉडी हु जस्ट कि एक बार में उसको समझ आ गया? क्योंकि मुझे तो एक बार में समझ आ गया कि ये चीज मेरे लिए नहीं है, अभी के लिए तो नहीं है। बिकॉज आई जस्ट वेस्ट भाई, टाइम वेस्टिंग वाली चीज है सही में। हर किसी को नहीं बोलूंगा, लेकिन भाई मोस्ट ऑफ द टाइम में ना इट इज एन टाइम वेस्ट, कंप्लीटली टाइम वेस्ट। एंड इफ यू जस्ट रिलेट इट, जस्ट कमेंट डाउन यस कि तुम इस चीज को रिलेट करते हो कि तुमने अपना काफी टाइम वेस्ट किया इन सब चीजों में ही पढ़ते। सो एक्चुअली यू आर गेटिंग प्लेस्ड, यू हैव अ ग्रेट स्किल्स। इफ यस, जस्ट राइट डाउन। बिकॉज आई वांट टू जस्ट कि जानना है मुझे कि खाली ये गलती सिर्फ मैंने करी है या फिर मेरे जैसे और भी हैं जिन्होंने गलती करी है। इट्स ओके ब्रो, इट्स ओके। इट्स अ नेचुरल थिंग। ठीक है, जब तक तुम कोई गलती नहीं करोगे तब तुम्हें पता नहीं चलेगा ना। अगर तुमने गलती करी तो जस्ट बताओ कि तुम इस चीज़ों में पड़े और तुमने अपना टाइम वेस्ट किया, क्योंकि मैंने तो अपना 1.5 साल वेस्ट किया है। एंड आई एम टोटली एग्री। ब्रो बिट्स एग्जैक्टली। एंड जस्ट लाइक कि लोग बोलते हैं भाई, ब्रो सुनाने नहीं लगते, वो कंपटीशन करने लगते हैं तुमसे। दे जस्ट स्टार्टिंग अ कंपटीशन, वो तुमसे कंपटीशन करेंगे। अच्छा तेरा ऐसे कटा था, देख मैं बताता हूँ मेरा तो कैसे कटा था, ऐसे करके ऐसे करके कटा था। सही में ब्रो, सही में होता है, कोई नहीं होता है, सबके साथ होता है। ठीक है,
सब कंपटीशन ही करने लगते हैं। अगर तुम मेरे साथ करोगे तो मैं भी कंपटीशन करने लग जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास भी अच्छी अच्छी कहानी है। लेकिन अब क्या ही करना है यार, बातों का क्या रखा है। एक टाइम पे वही है, खैर काश रह जाता है ना। खैर काश यही रह जाता है एक टाइम पे, है ना। बताओ भाई, किसका काश रह गया और किसका खैर रह गया? जस्ट कमेंट डाउन काश और खैर। किसका काश रह गया और किसका खैर रह गया? मैं तो लिख देता हूँ भाई, मेरा तो खैर छोड़ो, खैर रह गया भाई मेरा। तुम बताओ किसका काश रह गया? भाई किसका खार खैर और काश किसी का नहीं रह गया क्या? नहीं रह गया, खाली लगता है। नहीं रह गया। इज ओनली आई। पैसा बनाओ बस भाई, बाकी एक टाइम पर सब मिल जाएगा। बस यही सोच कर के खुद को मोटिवेट रखता हूँ, है ना। भाई आज ये सब चीजें भी कर लोगे, लेकिन लास्ट में भी ना एक चीज रह जाएगी, ठीक है। तो क्या बोलो भाई, छोड़ो यार। क्यों मतलब अपने अपने आप को खुद ही परेशान करना, है ना। पैसा बनाओ बस भाई, पैसा तो सब चीज है भाई। बिना पैसे के मेरी मसल सूख गई पूरी। आई हैव लॉस्ट माय 2 kg to 3 kg body weight in the last few months. Because of that, I just don't go to the gym for एग्जाम की वजह से। प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो पा रहा, स्लीप पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि लास्ट टाइम भाई प्लेसमेंट की इतनी टेंशन हो रही है यार। तो जब जब मतलब कोड करने बैठो है, जस्ट कि यार हर बार कोई एक नया एआई टूल आता है एंड दे जस्ट सेट कि यार तुम्हारी जॉब जाने वाली है। सब करो, रिग्रेट मत करो ब्रो। रिग्रेट यू जस्ट सेट की रिग्रेट मत करो भाई। रिग्रेट रिग्रेट तो यार देखो थोड़ा बहुत रहता ही है ना हमें। थोड़ा बहुत रिग्रेट रहना चाहिए कि तुम्हें रियलाइज तो हो कि अगर तुम एक ही मिस्टेक को दोबारा करने जाओ तो वो रिग्रेट तुम्हें समझाए। अब रिग्रेट को छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा बताओ। आई जस्ट फॉलो द वन थिंग। दिल्ली में कहाँ रहते हो ब्रो? दिल्ली में आई एम फ्रॉम द्वारका। आई एम फ्रॉम द्वारका ब्रो। द्वारका हर किसी को पता होगा। दिल्ली में बड़ी फेमस जगह है द्वारका। एवरीबॉडी नोज द्वारका। द्वारका के पास नजफगढ़ है, नजफगढ़ के पास तुम्हें गुड़गांव मिल जाएगा। गुड़गांव नजफगढ़ के पास नहीं है, बहादुरगढ़ मिल जाएगा। मतलब दिल्ली घूम रखा हूँ अच्छे से मैं। इज एनीबॉडी इन द लाइव स्ट्रीमिंग हुज आर फ्रॉम दिल्ली? इज एनीबॉडी फ्रॉम दिल्ली? क्योंकि अपने सूरज भाई तो मुंबई से है। पैसा इज समथिंग बट नॉट एवरीथिंग। पैसा इज मोस्ट बट जस्ट पैसा इज जस्ट लाइक it all na it will be kill your 99.9% problem. But 0.1% problem is not killed by a money. It will be killing by some something है ना। just blank, I just don't feel, I don't complete the happy or sad already broken. Because देखो, as if you are a man, you nobody care about you are a broken or you have a something or nothing. Nobody cares, है ना। and you will realize भाई टाइम के साथ तुम्हें हो जाएगा, ठीक है। सपोज तुमने कुछ नहीं किया और शादी कर ली और फाइनली फाउंड इट ड्रम। ब्रो जस्ट डोंट सेट दिस थिंग, ठीक है। मैं करूंगा ही नहीं। अभी हर किसी की फील्डिंग सेट हो। ये इंटरनेट की भी ऐसी की तैसी, जब जरूरत होती है तो हमेशा स्लो हो जाता है। बाकी इज आई एम ऑडिबल? आवाज आ रही है भाई मेरी? भाई फील्डिंग सेट हो रही है, मोस्ट ऑफ द बंदों की सेट है। मैं आता हूँ स्ट्रीम लाइक। ब्रो यू आर माई द व्यूवर ना। पता नहीं यार क्या होता है, मतलब कि अब देखो यार, एक बार ठीक हुई कहते सही हुई, एक बार सही हुई तो बताना थोड़ा। इज माई स्ट्रीमिंग
इज करेक्ट। अच्छी जा रही है ना? एंड व्हाई इज नॉट एनीवन इज सब्सक्राइबिंग माय यूट्यूब चैनल? ना सब्सक्राइब कर दो गाइस। आई एम अ नेटवर्क जैमर। ब्रो यू आर नेटवर्क जैमर। तुमने तो कभी आइडिया, वो आइडिया को तुमने तो बंद नहीं किया ना, एयरसेल सिम को। कोडिंग कॉलेज कौन सा तेरा? कॉलेज, आई एम डूइंग अ बीसीए फ्रॉम डिस्टेंस कॉलेज ब्रो। आई हैव नॉट अ कॉलेज। आई हैव अ रिग्रेट। I have a very regret, so much regret to pursuing a BCA from distance college. This is my biggest mistake. By the way, I'm just join an institute that will be located in Janakpuri. Why why just wait a 2 minute? I will be just back soon. I just getting an urgent call from my. Just wait. I will be back soon. Just wait. Hello? अरे कॉलेज क्या? अरे नहीं नहीं भाई, सही बताओ देखो, अभी ना ये कॉलेज वाले असाइनमेंट और दे देते हैं, ठीक है। अभी मैं सोच रहा था कि थोड़ा फ्री टाइम मिला है, मतलब तो कोडिंग करूंगा अभी असाइनमेंट के लिए। वो दोस्त कह रहा है कि हाँ भाई तेरी तो एक्स्ट्रा क्लास होगी नहीं, जाके असाइनमेंट बना ले, क्योंकि सबमिट करने हैं अप्रैल में। और ये असाइनमेंट तो ऐसे देते हैं जैसे कि पता नहीं भाई, सब स्कूल के हॉलीडे होमवर्क याद आ जाते हैं मुझे। मैं जो इतना लिखने का असाइनमेंट था तुम्हें वो